एस्पायर डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म मॉड्यूल 1 इसके क्विज़ इस वीडियो में हम हल करना सीखेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने लॉगिन होना है अपने CNEC से और सिस वाले पासवर्ड से। उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन अंडरस्टैंडिंग डिस्टेंस लर्निंग कंप्लीट करना है और वर्कशीट फिल इन दी ब्लैंक्स ये अगर मुकम्मल की है तो ठीक है, वरना आई बटन पे क्लिक करके ये मुकम्मल करें। देन आपने क्विज़ 1 मुकम्मल करना है, अगर ये नहीं किया तो भी आई बटन पे क्लिक करके ये मुकम्मल करें। टाइप्स ऑफ इमरजेंसी में आपने जस्ट PDF देखनी है और उसके बाद वर्कशीट में मैच करेक्ट कॉलम अगर आपने ये मुकम्मल नहीं किया तो भी आई बटन पे क्लिक करके इसे मुकम्मल करें। फिर क्लाइमेट चेंज की आपने वीडियो देखनी है और उसके बाद आपका ये टास्क मुकम्मल हो जाएगा। देन आपने क्विज़ हल करने अगर वो नहीं किए तो भी आई बटन पे क्लिक करके उसे मुकम्मल करें। अब हम एजुकेशन इन एमरजेंसी इसके लिए आपको ये वीडियो देखनी होगी, तब आप नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकेंगे। इसके लिए आप ये मुकम्मल वीडियो देखें। मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में क्विज़ के साथ हाजिर होऊंगा। This initiative is vital for providing educational opportunities to populations affected by acute or prolonged crises and disasters. Education in emergencies encompasses a set of linked project activities. ये एक्टिविटीज़ इस बात को यकीनी बनाती हैं कि शदीद बहरान, लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी या दीगर इमरजेंसीज़ के दौरान स्ट्रक्चर्ड तालीम को जारी रखा जा सके। ये इमरजेंसीज़ कई किस्मों की हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक्स, फ्लड्स एंड हरिकेन्स, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एपिडेमिक्स. Each of these situations disrupts the regular functioning of educational systems, posing unique challenges to continuing education. Education during such emergencies plays a pivotal role in restoring normalcy, providing safety and supporting affected populations overall, their overall development and prospects. Education in emergency के ज़रिए children and adults alike can regain a sense of hope and stability, which are crucial during times of upheaval. By understanding and supporting education in emergencies, we help build resilient communities that can better withstand and recover from crises, ensuring that education continues against all odds. This slide provides an overview of the key aspects of education in emergencies, a crucial component for supporting communities during crises. Taaleem mein tasalsul. First, we emphasize upon continuity of learning. It is vital to ensure that children and youth can continue their education despite disruptions caused by emergencies. This involves setting up alternative learning environments, including temporary classrooms or utilizing online and distance learning technologies. Protection. Next, we focus on protection. Schools often serve as a safe space for children, providing not only education but also protection from physical harm and psychological trauma that may accompany emergencies. Psychosocial support. Then we have psychosocial support. This aspect helps provide stability, structure and routine to children's lives, which are crucial for their psychological well-being in crises. असातिज़ा को नफ्सियाती मुआवनत फराहम करने और तुलबा को सदमे से निमटने में मदद देने की तरबियत दी जाती है। Adaptability and resilience. Adaptability and resilience are also key. Programs are designed to be flexible and responsive to the changing conditions of an emergency. They may need to address specific challenges like the migration of populations, the destruction of infrastructure, or resource limitations. Rights-based approach इस बात का एतराफ़ करते हुए कि मयारी तालीम तक रसाई ज़ाती और कम्युनिटी की तरक्की के लिए अहम है. We also uphold a rights-based approach to education in emergencies. International frameworks like the Convention on the Rights of the Child support this approach, urging that education should not be forsaken even in the hardest of times. और आखिर में शमूलियत यानी inclusion. Inclusion ensures that vulnerable populations, including refugees, internally displaced persons, and children with disabilities, have equal access to education opportunities. Understanding these key aspects helps us better prepare and respond to educational needs during emergencies, ensuring that every child retains the right to learn and to grow even under the most difficult of circumstances. Role of a teacher in facilitating distance learning. एक उस्ताद कमरा जमात में कई किरदारों के रूप में मौजूद होता है, जैसे कि इस तस्वीर टीचर्स हैट्स में देख सकते हैं।
हर टोपी एक मुख्तलिफ किरदार की अलामत है जिसे असातिज़ा लर्निंग एक्सपीरियंस बेहतर बनाने के लिए इख्तियार करते हैं. Let's explore some of these diverse roles a teacher embodies. The motivator and mobilizer. Teachers inspire students to excel and mobilize resources for effective learning. The executor and creator. They implement educational plans and create engaging lessons that spark curiosity. Coach or counselor. Coaches महारत की नशोनुमा में रहनुमाई करते हैं और counselors challenges से निपटने में तलबा की मदद करते हैं. The planner and writer. Teachers ensure that learning is structured and accessible by organizing lessons and crafting educational materials. The mediator, mentor, and nurse. They mediate conflicts, mentor personal growth, and sometimes provide basic healthcare. Through these roles, teachers shape educational experiences that foster knowledge and growth, impacting their students' lives. However, during emergencies, this role becomes even more critical as they adapt to maintain continuity of learning and provide stability and support to their students in challenging times. आइए अगली स्लाइड में हंगामी हालात में इन रोल्स पर नजर डालते हैं. So the first is ensuring continuity of learning. Teachers set up distance learning through online platforms, radio or TV and distribute home use materials, ensuring that education remains uninterrupted during emergencies. Then comes adapting educational content and methods. अपने तदरीस के तरीके और कंटेंट में नए सूरत हाल के मुताबिक रद्द-बदल करते हैं. Utilizing technology and simplifying lessons to make them accessible to all students. Providing psychological support is another role teachers are required to take. Teachers also provide essential psychological support, offering counseling services to help students manage stress, anxiety, and trauma. Maintaining engagement and motivation. Employing creative strategies is crucial to keep students engaged and motivated, making learning interactive and enjoyable. असातिज़ा लचक फराहम करते हैं. Flexibility in deadlines and learning paces is allowed to accommodate the unique challenges that arise during emergencies. Ensuring safety and well-being. Prioritizing students' physical and emotional safety, including their online safety, is a top priority. Liaising with parents and communities. Teachers communicate openly with parents and communities, welcoming their feedback and providing updates. Resource management. वसाइल को मौसर इंतज़ाम इस बात को यकीनी बनाता है कि हंगामी हालात के दौरान तालीमी कोशिशें सूदमंद साबित हों. Advocacy and policy support. Advocating for educational rights and influencing policies that support emergency education ensures that all students can learn. Monitoring and evaluation. Emergency education strategies are regularly assessed and adjusted to guarantee their effectiveness. ये किरदार मुश्किल तरीन हालात में भी टीचर्स की हालात के मुताबिक खुद को ढालने की सलाहियत और लगन को जाहिर करते हैं और इनके ज़रिए टीचर्स इस बात को यकीनी बनाते हैं कि तालीम का सिलसिला जारी रहे.